अभी मैं फाइनली मेरा यहाँ पे मैं हॉस्टल पहुँच गई। मैंने अपना सामान ले लिया, शॉपिंग वॉपिंग कर लिया एंड मैं फिर हॉस्टल पहुँची। एंड क्योंकि कॉपीराइट आ रहा है तो मैं थोड़ा दूर होकर बात कर रही हूँ। मैं हॉस्टल पहुँची, मैंने अपना सामान उठा लिया। अभी आई एम ऑन माई वे टू दी एयरपोर्ट। अभी मैं एयरपोर्ट जाऊँगी एंड दैट विल बी दी एंड ऑफ माई थाईलैंड ट्रिप। बट मैं दिखा देती हूँ मेरे यहाँ पे हॉस्टल के पीछे यू कैन सी एवरीवन इज़ हैविंग सो मच फन देयर। ये पूरा एरिया है जहाँ पे यू नो दे ऑल एन्जॉय एंड स्पेंड। तो ये बेड स्टेशन मैं बहुत मिस करने वाली हूँ क्योंकि ज़्यादा देर मैं यहाँ पे रही नहीं। जितना भी देर मैं रही मैं बाहर थी एंड यहाँ पे ज़्यादा मौका नहीं मिला इंटरेक्ट करने का। बट पीपल वर रियली नाइस एंड हियर आई एम वेटिंग फॉर माई बस। बस स्टॉप बस सामने ही है, होटल से ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्टल से। आई मीन यहाँ पे A4 वाला बस आने वाला है। यू कैन ओवर एक्चुअली ट्रैक ऑन योर फ़ोन की बस आपका कहाँ पे है। So that's a good thing and I am on my bus way to the airport and it feels so surreal and so grateful at this point. मेरा बस आ गया and I boarded the bus और अभी I am on my way to the airport. तो जल्दी I leave for airport and then my trip will very soon come to an end. So I'm just enjoying my last ride till the airport. एंड टू माई सरप्राइज़ बसेस यहाँ पे ऑडी को भी ओवरटेक कर लेते हैं एंड अभी हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। एंड वाइल आई वाज checking the view out I realized कि yeah this is probably my last view of the hotels and I am so happy over here. This is Bangkok Sky, my hotel, and I am gonna miss this place so much. It was so pretty, so serene. I had never imagined I'm gonna love Thailand so much क्योंकि you know people make an assumption about this place, but guys please visit and I am gonna visit very soon. And here I am in the airport. मैं अभी जस्ट बस से उतरी एंड आई एम हियर एट द एयरपोर्ट नाउ ऑन माई वे टू चेक इन बैगेज चेक इन करके उसके बाद आई वेट फॉर माई फ्लाइट एंड देन आई फ्लाई बैक होम। एक्चुअली टिकट में मेरा सीट काफ़ी पीछे था तो मैंने इनको बोला इन्होंने मेरे को 4th रो में सीट दे दिया। सो शी वॉज वेरी नाइस। मेरा सीट बहुत पीछे था एंड मेरा कोई विंडो सीट भी नहीं था बट द एयरपोर्ट स्टाफ वाज सो गुड। आई आस्क्ड हर वेरी नाइसली दैट इफ शी कुड जस्ट गिव मी विंडो सीट इफ देयर इज अवेलेबल एनी and she very sweetly moved my seat to a very nice spot. बहुत आगे उन्होंने सीट कर दिया and I'm so happy for that. That happened and अभी मेरा चेक इन हो गया है बैगेज का और मैं अभी थोड़ा सा इधर उधर घूमूंगी एंड देखूंगी क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट. सो लेट्स सी व्हाट आई डू. सो ये मेरा पासपोर्ट है और यहाँ पे जाना है इमिग्रेशन के लिए. दिस इज़ वेयर आई एम हेडिंग टू फॉर माई इमिग्रेशन and this is my disembarkation form. Someone taught me in the comments, so that is also needed. So yeah, I'm gonna go for immigration now. So I came to this duty free place to check out something for friends and family and I got some. यहाँ पे बहुत सारे options थे and they were so inexpensive over here. इंडिया से ज़्यादा और बहुत सारे options थे. मैंने मेकअप भी देखा था but मेकअप ड्यूटी फ्री में भी इंडिया से महंगा था. So there was no point checking them out or buying them from here. And yeah, here I am. My flight's here. So I am on my way. So this was my one last Thai meal and yeah, after this I started playing games in the airport. They had some games because there was a lot of time to kill there. So guys मेरा बोर्डिंग हो गया है and now I am on my way to the flight. और क्योंकि मेरा सीट बहुत आगे है तो बहुत पूरा खाली है and I am super excited. So yeah, no I'm not excited. I'm actually very sad that I have to go. I really don't want to go. मेरे को नहीं जाना है थाईलैंड से बट एनीवेज लेट्स गो. मैं खुश हो गई थी क्योंकि मेरा सीट अच्छा है बट एक्चुअली खुशी का क्या बातें घाटे जा रहे हैं. आई रियली वांटेड टू स्टे 2 more days बट एनीवेज आई एम ऑन माय वे टू द फ्लाइट. देयर इज द फ्लाइट. आई डोंट वांट टू गो बट आई हैव टू. Devices such as mobile phones,
Laptop computers are to be switched off. Please note that smoking is not permitted. Key reminder, please put your seat in the upright position, fasten your seat belt. So you treat mobile phone. In your flight or flight mode, please refrain from using the device to prepare for takeoff. Please be reminded that. And guys, now it's time to finally take off. These days have been amazing. This week has been amazing. Best week of my life. I couldn't have imagined that I will make an international trip on my own so soon in my life, and I'm so glad I did it, and I'm so grateful. But just look at this beauty. By Thailand, I cannot wait to visit again. Until next time, I'm definitely gonna come back. And here I am in Kolkata airport, and that is it for my Thailand trip. I guess I was really sad at this point. I did not, while the in the flight I was so scared कि अभी पहुंच जाएगा, and that will be the end, because this is the very first time I was not excited to go home, but anyways I had to. So guys, I'm finally back to Calcutta. I have zero excitements about it this time. So anyways, अभी बैगेज क्लेम करना है, तो बैगेज में आई हूँ, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है. सो आई विल स्पीक टू यू ऑल व्हेन आई एम डन विद द एयरपोर्ट थिंग. Hi guys, so I have finally come out of the airport, and seriously I don't feel good, because I seriously did not want this trip to end so quickly. तो जो भी है, भूख तो लगा है क्योंकि बहुत लेट हो गया. 1:12 हो रहे अभी. तो अभी मैंने एक चिकन बिरयानी लिया है फ्रॉम ईट बेटर ट्रैवल बेटर करके कुछ है, एंड उसके साथ कुछ रायता मिला है, एंड आई टेकन अ बॉटल ऑफ वाटर. So I will have this first, and then I'll speak to you guys. So guys, I am finally back in my house, in my room. अभी रात के 3 बज रहे हैं. मैं अभी व्लॉग एंड नहीं करूँगी, मेरे को कुछ बताना है एट द एंड ऑफ द व्लॉग. तो मैं कल सुबह वापस उठ के आई विल एंड माई व्लॉग. बट my doggy is here, and I am here too. I am going to snuggle him so much. So I'll see you guys tomorrow in the morning, and then I'll end the vlog. Bye. Hey guys, good morning. So it's the next day, and I am finally back home. But yesterday I did not end the vlog. I wanted to end the vlog by saying कि कल फ्लाइट में क्या हुआ. एक्चुअली कल फ्लाइट में अचानक से आई सॉ एक आंटी, शी वाज स्टैंडिंग, काफ़ी पीछे उनका सीट था. देयर वाज अ वन स्मॉल किड विथ हर, एंड देन she just fell. She fell down. She fell on a seat. She got unconscious, and there was luckily one doctor auntie who was taking care of her throughout the plane. I think she had some heart problem. I don't know. Something happened to her. She wasn't getting her consciousness back for a long time. All the flight attendants, everyone was so scared, and everyone were running here and there. But last में she was okay. She got down and everything. So कल flight में it was really I was really scared actually कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरा first time experience था किसी को ऐसे देखते हुए. So anyways, that happened in the flight yesterday, and yeah, so I am finally back. I loved Thailand. I had no idea कि मेरे को ये country इतना पसंद आएगा, and I am so glad that I made this trip. It was one of the most amazing time of my life, of course, because this is the first time I went out of the country, and I'm so glad that I did. I made it on my own, and I'm so thankful for you guys. I'm so grateful for you all कि because of you all I could make this trip, and I'm super happy and super glad, and I really want to be a travel vlogger if I get the chance. If you guys like
watching my videos only, then will I be able to do it. Anyways, I absolutely love this trip. I cannot wait to go back to Thailand. Seriously, I cannot wait to go back there, because I have missed on a lot of things, and I will plan better next time for sure. I will take more days with me. And anyways, you can see the smile. I am super happy to meet my butter, but other than that, I'm not happy about being in India. I don't want to be in India because Thailand was so much better. I'm missing the 7-Elevens already. Yeah, and the coffee culture over there. So yeah, that is pretty much it for this video, and that is it for Thailand vlog trip series. Some more videos related to Thailand are gonna come up. Haul video is gonna come up, and बहुत सारे videos है planned Thailand के जो मैं और भी डालूंगी. So you guys stay tuned for those videos, and I'll see you guys super soon in my next video. Bye guys.